Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. Rama Rama, Hare Hare. तो बाद में देखेंगे माइक का ठीक करो पहले माइक का ठीक और इसको इधर साइड लगा Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 वॉल्यूम बढ़ा Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Hastatara Srimad. His Divine Grace Srila Abhay Charanaravinda Bhakti-yoga Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON founder, BBT founder Srila Prabhupada ki. Sri Chaitanya Caritamrita ki. Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami ki, Bhakti-yoga purports ki, Ananta Gaudiya Vaishnavism ki, Natai Gaur Premanande, Hare Hari. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya
Gaura Bhakta Vrinda. We are reading from Sri Chaitanya Caritamrita, the Madhya-lila chapter 4 entitled Sri Madhavendra Puri's Devotional Service, text number 147. तो हम श्री चैतन्य चरितामृत आदि-लीला मध्य-लीला अध्याय 4 अध्याय का नाम है श्री माधवेंद्र पुरी का भक्ति और श्लोक संख्या 147। Pratistara Baye Puri Gela Palana. Pratistara Baye Puri Gela Palana. Krishna Prema Pratista Chale Sange Gadana. Krishna Prema Pratista Chale Sange Pratistara Baye Puri Gela Palana. Krishna Prema Pratista Chale Sangha Gadana. So we'll do the word for word in English, because somebody posted this previous class of mine on the internet 2 days ago. Two days ago there I gave class in the morning. So you put it on the internet, right? Yeah, so then somebody wrote me and they heard the class and they said, but we don't know what the English is. So word for word. Pratistara Baye, in fear of reputation. Puri, Madhavendra Puri. Gela, went away. Palana, fleeing. Krishna Preme, in love of Krishna. Pratistha, reputation. Chale, goes. Sange, simultaneously. Gadana, gliding down. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Being afraid of his reputation, Pratistha, Madhavendra Puri fled from Ramuna. But the reputation brought by love of Godhead is so sublime that it goes along with the devotee as if following him. You have a book called I'll Build You the Temple here? You have a copy? Where's the copy in the room? Where's the copy? Go and bring it. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Almost all the conditioned souls within the material world are envious. Jealous people generally turn against one who automatically attains some reputation. This is natural for jealous people. Consequently, when a devotee is fit to receive worldly reputation, he is envied by many people. This is quite natural. When a person out of humility does not desire fame, people generally think him quite humble and consequently give him all kinds of fame. Actually, a Vaishnava does not hanker after fame or a great reputation. Madhavendra Puri, the king of Vaishnavas, bore his reputation, but he wanted to keep himself outside of the vision of the general populace.
He wanted to cover his real identity as a great devotee of the Lord, but when people saw him overwhelmed in the ecstasy of love of Godhead, they naturally gave credit to him. Actually, a first-class reputation is due Madhavendra Puri, because he was the most confidential devotee of the Lord. Sometimes a Sahajya presents himself as being void of desires for reputation, pratishtha, in order to become famous as a humble man. Such people cannot actually attain the platform of celebrated Vaishnavas. So you can read the translation and purport in Hindi. अनुवाद। अपनी प्रतिष्ठा के भय से माधवेंद्र पुरी रेमुना छोड़कर चले गए, किंतु भगवत प्रेम द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा इतनी उत्कृष्ट है कि वह भक्त के साथ साथ जाती है, मानो उसका पीछा कर रही हो। तात्पर्य: भौतिक जगत के प्राय सारे बद्ध जीव ईर्ष्यालु होते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति सामान्यतः उसका विरोध करते हैं, जिससे स्वयमेव कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। ईर्ष्यालु लोगों के लिए ऐसा करना स्वाभाविक है। फलस्वरूप जब कोई भक्त लौकिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने योग्य बन जाता है, तो अनेक लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति विनयवश यश की कामना नहीं करता, तो सामान्यतः लोग उसे विनीत समझकर सभी प्रकार का यश देने लगते हैं। वस्तुतः वैष्णव यश या प्रतिष्ठा की लालसा नहीं करता। वैष्णव श्रेष्ठ माधवेंद्र पुरी की प्रतिष्ठा पहले से ही थी, किंतु वे अपने आप को जन समुदाय की दृष्टि से दूर रखना चाहते थे। वे महान भगवत भक्त के रूप में अपने परिचय को छिपा रखना चाहते थे, किंतु जब लोगों ने उन्हें भगवत प्रेम में भाव विह्वल देखा, तो स्वाभाविक है कि वे उनका सम्मान करने लगे। वस्तुतः माधवेंद्र पुरी की उच्च कोटि की प्रतिष्ठा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत अंतरंग भक्त थे। कभी कभी सहजिया लोग अपने आप को प्रतिष्ठा की कामना से रहित प्रस्तुत करके विनीत व्यक्ति के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को वास्तव में सुप्रसिद्ध वैष्णवों का पद प्राप्त नहीं हो सकता। Om Ajnana Timirandasya Ajnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Svapadantikam Vanchakalpa Tadubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So on every Friday morning here in ISKCON Chandigarh temple, you read and discuss from Sri Chaitanya Caritamrita. तो हर
सप्ताह शुक्रवार के दिन हम यहाँ पे ISKCON चंडीगढ़ में चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं. So yesterday marked the anniversary disappearance of Srila Ishvara Puri, the principal disciple of Srila Madhavendra Puri. कल जो था श्री ईश्वर पुरी जो कि श्री माधवेंद्र पुरी का मुख्य शिष्यों में थे, मुख्य शिष्य थे, उनका तिरुभाव दिवस था. And today we are reading from this particular verse from Sri Chaitanya Caritamrita about the exalted nature of Srila Madhavendra Puri. तो आज हम चैतन्य चरितामृत में इस श्लोक में श्रील माधवेंद्र पुरी का जो उन्नत गुण है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं. You have to speak more in the microphone. So during the last stage of the life of Sripad Madhavendra Puri, he became invalid and he was completely unable to move. श्रील माधवेंद्र पुरी अपना अंतिम दिनों में बिल्कुल वो चल फिर नहीं सकते थे और एक ही जगह में रहते थे. And Ishvara Puri, who was his principal disciple, he completely engaged himself in Madhavendra Puri's service in such a way that he was personally also cleaning up after he passed stool and urine. श्रील ईश्वर पुरी जो उनके मुख्य शिष्य थे उनकी बिल्कुल बहुत सेवा करते थे, यहाँ तक कि श्रील माधवेंद्र पुरी की मल मूत्र भी वो सफाई करते थे. And Srila Ishvara Puri was always chanting the Hare Krishna Maha-Mantra while serving Sripad Madhavendra Puri in his last days. In a way, indirectly, sort of reminding, not that you're reminding your spiritual master, but in a way, he's so Krishna conscious, and that's sort of indirectly assisting Madhavendra Puri in the last stages of his life. तो माधवेंद्र पुरी अंतिम दिनों में जब श्रील ईश्वर पुरी सेवा करते थे उनकी, तो साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का भी कीर्तन करते थे ताकि उन अंतिम दिनों में माधवेंद्र पुरी को असिस्ट कर रहे थे उनको कृष्ण स्मरण में. And Ishvara Puri used to always also sing the pastimes of Lord Krishna, and he happened to give the best service amongst the disciples of Madhavendra Puri to Madhavendra Puri. श्रील माधवेंद्र पुरी के समस्त शिष्यों में से सबसे जो अच्छी तरह से सेवा की वो ईश्वर पुरी थे, और वो जब भी वो सेवा भी करते तो कृष्ण कथा का भी चर्चा करते थे. Madhavendra Puri was so pleased by the service of Srila Ishvara Puri that he blessed him. तो श्री माधवेंद्र पुरी ने ईश्वर पुरी की सेवा से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने आशीर्वाद दिया. And he said, "My dear boy, I can only pray to Krishna that Krishna will be most pleased with you." उन्होंने बोले कि मेरे प्रिय शिष्य यही मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, कृष्ण से प्रार्थना कर सकते कि वो आपके ऊपर पूर्णतः प्रसन्न हो जाए. And just by that blessing of Sripad Madhavendra Puri in his final days to Ishvara Puri, he was swelling with love in terms of love of Radha and Krishna. तो internally. उस आशीर्वाद जो श्री माधव ने अपने अंतिम दिनों में दिया था, उस आशीर्वाद के बल पे श्री ईश्वरपुरी पूर्णतः कृष्ण प्रेम में वो पूर्ण थे. And Srila Prabhupada quotes in that particular purport from Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Yasya prasadat Bhagavat prasado, Yasya prasadan nagati kutopi, which means that by the mercy of the spiritual master, one is blessed by the mercy of Krishna. श्री कृष्ण से अगर बताता कि जब किसी को गुरु का कृपा प्राप्त होता है तो स्वतः उसको कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होता है. And without the mercy of the spiritual masters, one cannot, you could say in one sense,
Yeah, without the mercy or grace of the spiritual master, one really cannot make any spiritual advancement. और गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई वास्तव में कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता. So it is by the mercy of the Shiksha and Diksha gurus that the devotee can become perfect, as very nicely exemplified here in the case of Srila Ishvara Puri to Madhavendra Puri. बिना शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की कृपा से कोई प्रगति नहीं कर सकता, जैसे कि इस उदाहरण में माधवेंद्र पुरी और ईश्वर पुरी के उदाहरण में देखने को मिलता है. Usually an exalted person is always protected by Sri Krishna, but if he appears to be invalid, like Madhavendra Puri in his last days, this gives a chance to the disciples to serve the personal form of the spiritual master. साधारणतः जो एक महान व्यक्ति होता है उसको भगवान श्री कृष्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन किसी केस में जैसे कि माधवेंद्र पुरी केस में वो उनका शरीर काम नहीं कर रहा था, तो तब शिष्य को सुयोग मिलता है कि ऐसे महान व्यक्ति को बप्पू सेवा करने की. And Srila Ishvara Puri pleased Srila Madhavendra Puri beyond words and comparison, and therefore by the blessings of Sripad Madhavendra Puri, he became a great personality that Lord Chaitanya personally accepted Ishvara Puri as his spiritual master. श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की आशीर्वाद के कारण श्रीला ईश्वर पुरी इतने महान वैष्णव बने कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको अपनी आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किए. So similarly in this book there's a similar situation in I'll Build Your Temple, the Jews story, which speaks about Prabhupada's Antya-lila, his final pastimes in great detail in the chapter called Vrindavan, the Final Journey. You can read it in this book. There's no greater detail given of Prabhupada's final pastimes other than in this book. Even there's more detail in this book than from the Lilamrita. So, जो ईश्वरदास गिरिराज महाराज ने किताब लिखा है, द जू स्टोरी, तो उसमें प्रभुपाद जी के अंत्य लीला के बारे में बहुत ही विस्तार में वर्णन है. इवन प्रभुपाद लीलामृत से भी ज़्यादा विस्तार में वर्णन हुआ है, जिसमें कि चैप्टर है द फाइनल वृंदावन जर्नी. वृंदावन को जो प्रभुपाद जी बॉम्बे से गए थे, उस जर्नी. So on page 625, it describes and the day before Srila Prabhupada departed, which is November 13th, तो 1977. पेज 625 में जब प्रभुपाद जी वृंदावन जाने से एक दिन पहले की वर्णन है, जो कि 1977 की बात है. So there were two devotees with Srila Prabhupada, His Holiness Giriraj Swami and Upendra Prabhu, who was his personal servant. तो उसमें दो भक्त प्रभुपाद जी के साथ है, एक है हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी और दूसरा है उपेंद्र प्रभु, जो कि श्रील प्रभुपाद जी की सर्वेंट थे. So Srila Prabhupada indicated to Upendra Prabhu that he wanted to pass urine, water. तो श्रील प्रभुपाद जी उपेंद्र प्रभु को इंगित किया कि मैं यूरिन पास करना चाहता हूँ. So Upendra indicated to His Holiness Giriraj Swami that he should help Prabhupada with this. और उपेंद्र प्रभु गिरिराज स्वामी को इंडिकेट किया कि इंगित किया कि प्रभुपाद जी को मदद करें इस कार्य में. Because Prabhupada was invalid. He was just on the bed. He couldn't do anything on his own. Just like Sripad Madhavendra Puri in relation to Ishvara Puri serving him. तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल इनवैलिड थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, अपने आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, जैसे कि माधवेंद्र पुरी की स्थिति था उसी तरह की. So His Holiness Giriraj Swami, he that time Giriraj Das Brahmachari, he placed the bottle to pass water between Srila Prabhupada's legs.
तो उस समय गिरिराज स्वामी जो कि गिरिराज दास ब्रह्मचारी थे, उन्होंने प्रभुपाद जी के दोनों पैरों के बीच में एक बॉटल रखा ताकि वो पास कर सके। And with great sensitivity, he eased this private part, into it and waited, but no water was being passed by Srila Prabhupada. तो गिरिराज महाराज ने बड़ी सेंसिटिविटी के साथ, क्योंकि वो प्रॉपर ही प्राइवेट पाता, उसने बॉटल का रखा, लेकिन कोई पानी आया नहीं, ऋण आया नहीं। So Giriraj Swami, he waited and waited, and then he looked at Upendra, and Upendra indicated that he should take the urinal bottle away. तो महाराज ने बहुत समय इंतजार किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने उपेंद्र प्रभु की तरफ देखा, तो उपेंद्र प्रभु ने इशारा किया कि आप बोतल को निकाल लो। So His Holiness Giriraj Swami was mentioning that although Prabhupada was indicating that he may want to pass water, but yet he didn't pass, but he said the experience just to assist him with that was so incredible. हालांकि प्रभुपाद जी ने इंगित किया कि वो यूरिन पास करना चाहते, लेकिन हुआ नहीं कुछ भी। लेकिन जो प्रभुपाद जी को उन्होंने उनकी सेवा किया, उसका जो अनुभव है वो बहुत ही अद्भुत है। That he was mentioning that this simple menial service to Srila Prabhupada, that he felt so purified that even if he offered hundreds of artis a day, or even chanted hundreds of rounds, he wouldn't have got more purified. Just a simple service. ये वो सिंपल हम्बल सा सर्विस है, उनको जितना शुद्धिकरण हुआ, वो में भी 100 आरती पूरी दिन भर में करे या 100 राउंड चैंटिंग कर रहे, उससे में इतना भी शुद्धिकरण नहीं होता जितना शुद्धिकरण ये छोटे से एक्टिविटी से। So he considered that Srila Prabhupada, although appeared to be invalid, he gave the opportunity to his disciples to serve him in an intimate way in the last days. हालांकि ऐसे लग रहा है कि श्रील प्रभुपाद जी इनवैलिड है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को अपॉर्चुनिटी दे रहे, सुयोग दे रहे हैं कि ताकि उनका अल्टीमेट सेवा, अंतरंग सेवा कर सके। So that's the glory of Srila Ishvara Puri in relation to Sripad Madhavendra Puri, in relation to how Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted Madhavendra Puri as his spiritual master because of his service to Srila Madhavendra Puri. तो ये श्री ईश्वर पुरी का ग्लोरी है, गुणगान है, जो कि माधवपुरी पुरी के कॉन्टेक्स्ट में है। तो इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया। So in the Adi-lila, it is also stated that Sri Krishna himself, before appearing as Sri Chaitanya Mahaprabhu, he choreographed and he planned who should go before him when he appears as Sri Chaitanya Mahaprabhu. श्री चैतन्य चरितामृत आदि-लीला में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे अवतरित होने से पहले उन्होंने पहले ही भेजा कि कौन उनसे पहले उनकी लीला में सहायता करने के लिए अवतरित हो। So he requested, Lord Krishna requested the following devotees to enter into Chaitanya-lila before he enters actually into Chaitanya-lila. तो श्री भगवान श्री कृष्ण स्वयं अनुरोध किया उन भक्तों को कि वो चैतन्य लीला में आने से पहले वो लोग पहले अवतरित आए। So he requested his mother and father, Sachi Mata and Jagannath Mishra. उन्होंने अपनी माता पिता सची माता और जगन्नाथ मिश्र को अनुरोध किया। One none other than Yashoda Nanda Maharaj, जो कि यशोदा और नंद महाराज से अभिन्न है। He requested Sripad Madhavendra Puri, which identity we will reveal soon in Krishna Lila. तो उन्होंने माधवेंद्र पुरी को भी अनुरोध किया, जो कि कृष्ण लीला में उनका जो आइडेंटिटी है जल्दी बताएंगे। And he requested Keshava Bharati, Ishvara Puri, Advaita Acharya.
उन्होंने केशव भारती, अद्वैत आचार्य, ईश्वरपुरी इनको भी अनुरोध किया. Srivas Pandit, Acharya Ratna, Vidyanidhi and Haridas Thakur to go before him. श्रीवास ठाकुर, विद्यानिधि, आचार्य रत्न और हरिदास ठाकुर को भी अनुरोध किया कि उनसे पहले प्रकट हो. So, in Krishna Lila, we find that okay, before we describe that, we'll have to give a premise, and the premise is as follows: that nobody, practically nobody, can be in the presence of Radha-Krishna's intimacy. कोई भी व्यक्ति मतलब राधा कृष्ण जो है उनकी. Is he translating? I was translating, but I just. Your mind went to the Katha also. Just kept this. You have to be attentive. Sorry. So nobody can witness the intimacy of Radha-Krishna. कोई भी व्यक्ति राधा कृष्ण जो है उनका अंतरंग लीला को देख नहीं सकता. Because there's no intimacy. अच्छा, क्योंकि कोई इंटीमेसी या अंतरंगता है नहीं. Radha-Krishna are one supreme soul in two forms. राधा और कृष्ण वो एक ही, उनका दो रूप है लेकिन एक ही व्यक्तित्व. And Sri Krishnadasa Kaviraja Goswami gives several examples to explain this point. और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत से उदाहरण देते हैं इस तथ्य को समझाने के लिए. He says, Mirgamada Ganda Aiche. He says, Ganda means a fragrance or a scent, coming from Mirgamada, which means musk. तो मृगमद गंधा, गंधा मतलब जो फ्रेग्रेंस होता है, गंध होता है. और तो मस्क क्या हिंदी में बोलेंगे? कस्तूरी. Kasturi, yeah. So the fragrance that is emanating from the musk is different, but at the same time it's non-different. So जो कस्तूरी का गंध निकल रहा है वो उससे अलग है लेकिन वास्तव में अलग भी नहीं है, सेम है. And you cannot separate the fragrance from the musk. It's inseparable. तो कस्तूरी से उसके गंध को आप अलग नहीं कर सकते. So in one sense, you cannot separate Radha from Krishna. तो इसी तरह से हम राधा रानी को कृष्ण से अलग नहीं कर सकते. So there's no intimacy to be discussed. तो इसीलिए उनसे कोई इंटीमेसी अंतरंगता डिस्कस नहीं किया सकती. Because there's one supreme soul in two forms, and the two forms is like the kasturi and the ganda, the fragrance. They together all the time. तो उसी तरह से एक व्यक्तित्व, परम व्यक्तित्व जो कि दो रूप में प्रकट हुए हैं, जैसे कि कस्तूरी और गंध को हम अलग नहीं कर सकते हैं, एक ही वस्तु है. उसी तरह से But they may appear to be separated just for the sake of ras or pleasure. तो मुख्य कारण जो है रस की दृष्टि कारण वो उनका भिन्नता होता है. See? And then he gives another example of a jwalite, something in the verse. Anyway, he says that fire gives heat and light. उन्होंने और एक उदाहरण दिया जो अग्नि है उत्ताप और आलोक देता है. But you cannot separate the heat and light from fire. तो किंतु हम अग्नि से उत्ताप और आलोक को अलग नहीं कर सकते. As much you cannot separate the sun's rays or sunshine from the sun. जिस तरह कि हम सूर्य को सूर्य की किरणों से अलग नहीं कर सकते. So the intimacy of Radha Krishna cannot be understood and cannot be discussed because there's no intimacy. They're always together.
Just like the fragrance is always together with the musk, and the heat and light is always with fire, and the sunshine or the sun's rays is always with the sun. इसी तरह से हम राधा और कृष्ण को अलग करके हम समझ नहीं सकते, क्योंकि उनको इसलिए कोई इंटिमेसी नहीं है, क्योंकि वो एक ही है। जिस तरह से हम सूर्य की किरणों को सूर्य से अलग नहीं कर सकते, जो कस्तूरी के गंध को कस्तूरी से अलग नहीं कर सकते हैं, या उत्ताप और आलोक को अग्नि से अलग नहीं कर सकते। So therefore they are one supreme soul appearing as two for the sake of enjoying with each other, which no one knows. इसलिए वो वास्तव में एक परम व्यक्तित्व है, सुप्रीम सोल है, जो कि अपने को आपको दो रूपों में विभक्त करते हैं ताकि वो आनंद लेने के लिए, जिनको भी कोई जानता नहीं इस बात। So in Vrindavan there's a place called Sevakunj. वृंदावन में एक जगह है जिसका नाम है सेवा कुंज। And Sevakunj, if you go today there, you'll see there's like very, very low trees, but the branches touch the ground. वह सेवा कुंज में हम जाएंगे तो देखेंगे बहुत ही कम ऊंचाई के वृक्ष दिखेंगे, लेकिन उनका जो टहनियाँ हैं जमीन को लगभग टच कर रहे होते हैं। So when Vishwanath Chakravarti Thakur says Nikunja yuno ratikeli sidhai yayalu biryuktir apeksaniya, these trees they turn into a bower like a small cave. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलता है निकुंज जीर्णो ऋतिक के लिए सिद्धे याली भी युक्ति अपेक्षणीय। तो वास्तव में जो वृक्ष हैं वो इसी तरह से घूम जाते हैं ताकि एक छोटा सा गुफा जैसे बन जाए। But when the tree, when Radha-Krishna enters under the tree, all the branches of the tree, they form a bower, kunj. And then the branches intertwine in themselves, and some of the leaves fall onto the ground to make it very cushion-like with its flowers. तो जो राधा कृष्ण उस वृक्ष के नीचे जाते हैं तो वृक्ष अपने आप मुड़ जाते हैं ताकि एक गुफा की तरह बन जाए और आपस में जुड़ जाते हैं नेट की तरह, और फिर कुछ पत्र और पुष्प गिरते हैं ताकि वो कुशन गद्दी जैसे बन जाता। So there's a natural bed first of leaves, and then there's on top of that it's like a sheet of flowers, fragrant flowers from this kalpavriksha tree. तो पहले जो पत्ते गिरते हैं वो ऐसे बेड की तरह होता है और गद्दे की तरह, और उसके ऊपर जो फ्रैग्रेंट सुगंधित पुष्प गिरते हैं उसके ऊपर शीट बेड शीट के। And the flowers have their own illumination when touched by Radha-Krishna. Not Radha and Krishna. Radha-Krishna are one supreme soul. They're always intimate. They're always together, so there's no separation. तो जो राधा और जो कृष्ण है वो अलग अलग नहीं है, राधा कृष्ण एक ही व्यक्तित्व है, तो हम अलग अलग नहीं बोलना चाहिए। राधा कृष्ण जब वो फूल जो राधा कृष्ण को स्पर्श करते हैं तो उनका अलग ही इल्यूमिनेशन है। We don't say Shri Shri Radha and Madhava. We say Shri Shri Radha Madhava because it's one. तो हम ये नहीं बोलते कि श्री श्री राधा और माधव, हम बोलते हैं श्री श्री राधा माधव। So when this kalpavriksha tree forms a bower, a kunj, and when the branches intertwine, not even air can enter, vayu cannot enter, not even the sun can enter with its sunlight, nothing can enter. जब वो वृक्ष जो कुंज बन जाते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं,
इंटरट्यून हो जाते हैं, तो उसमें से इवन वायु भी नहीं प्रवेश कर सकता, अभी सूर्य का आलोक भी नहीं प्रवेश कर सकता. Like it's stated in the scriptures in the Srimad Bhagavatam, 5th canto, that those who are very sinful and execute their sinful activities privately, like in some home or room or apartment or hotel, they're thinking nobody is watching them. But Prabhupada says all the demigods are watching you. Don't think you privately doing things and nobody is going to catch you. तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद में 5वें स्कंद में बताया गया, जो लोग पाप कार्य में लगे रहते हैं अलग अलग जगह में, रूम्स में या ऐसे जगह में, जो सोच के उनको कोई नहीं देख रहा है, ये श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सारे देवी देवताएं उनको देख रहे हैं, ऐसे नहीं, कोई नहीं देख रहा है. But with Radha-Krishna, nobody can watch them. लेकिन राधा कृष्ण उनको कोई नहीं देख सकता. Not even the sun, the moon, not even the moon's rays can enter, the sunshine can enter, or vayu, the air. ना उनके उस कुंज में ना सूर्य का आलोक प्रवेश कर सकता है, ना चंद्रमा का रश्मि प्रवेश कर सकता है, ना वायु प्रवेश कर सकता है. They are self-sustainable. They don't depend on anything or anyone. तो अपने आप में अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल है, उनके लिए चंद्र सूर्य या वायु की आवश्यकता नहीं है. But there's only one witness. पर उनका एक ही विटनेस या साक्षी है. Anyone knows? Yes? The Kalpa-vriksha tree itself. तो एक ही मतलब जो साक्षी है देखने वाला, वो क्या, जो कल्प वृक्ष है. And that is Sri Padmadevendra Puri. और वो श्री माधवेंद्र पुरी है. He is considered the root of the desire tree of devotional service in the form of a Kalpa-vriksha tree given to us by Srila Kavi Karnapur in the Gaur Ganades Dipika. So, गौर गणदेश दीपिका में श्री कवि कर्णपुर में बताते हैं कि जो माधवेंद्र पुरी है, जो भक्ति लता का, जो भक्ति का उसका जड़ है. So Madhavendra Puri is an incarnation of the root of all Kalpa-vriksha trees in the abode of Vraja. तो जो श्री माधवेंद्र पुरी जो है का जो आध्यात्मिक जगत में जो कल्प वृक्ष है उसका जड़ है, मूल. And the root of all Kalpa-vriksha tree, it bears many fruits and flowers within the mellow of engaging in service to Radha-Krishna. तो कल्प वृक्ष के रूप में बहुत सारे फल और फूल वो अपने धारण करते हैं, जो कि राधा कृष्ण की सेवा के रूप में प्रकट होते हैं. And the evidence is given in Sri Chaitanya Caritamrita in the Adi-lila, chapter 9, text 9 and 10. तो इसका जो प्रमाण जो है श्री चैतन्य चरितामृत आदि-लीला अध्याय 9 और श्लोक नंबर 9 और 10 में बताया गया है. And there it says, Jaya Shri Madhavendra Puri Krishna Prema Pura Bhakti Kalpa Ta Rura Tenho Pratana Ankura. And Prabhupada translates, all glories to Shri Madhavendra Puri. तो प्रभुपाद उसका अनुवाद करते हैं कि श्री माधवेंद्र पुरी की जय हो. The storehouse of all devotional service unto Krishna. सारे भगवान श्री कृष्ण का सेवा का जो मूल स्रोत है. He is a desire tree of devotional service. Bhakti Kalpataru. He is a desire tree of devotional service. वो भक्ति कल्पतरु है. And it is in him that the seed of devotional service first fructified. और वो उन्हीं में ही वो जो भक्ति का जो बीज है पहले अंकुरित हुआ. In other words, in our disciplic succession, Madhavendra Puri
introduce Radha Bhav and Krishna Prem. तो हमारी संप्रदाय में श्रील माधवेंद्र पुरी प्रथम थे कि जो कि राधा भाव और कृष्ण प्रेम का प्रचलन किया. So Radha Bhav is in Krishna and Krishna Prema is in Radha. So जो राधा भाव है वो कृष्ण में है और जो कृष्ण प्रेम है वो राधा रानी में है. Krishna experiences the bhav or ecstasy of Radha, and Radha experiences the love of Krishna, which is Krishna Prema. That was introduced by Madhavendra Puri into our disciplic succession. So जो राधा कृष्ण जो है राधा रानी के भाव को अनुभव कर रहे हैं और जो राधा रानी है कृष्ण प्रेम को अनुभव कर रहे हैं. तो ये जो भाव है माधवेंद्र पुरी हमारी संप्रदाय में पहले इंट्रोड्यूस किया. And then who is Ishvara Puri in relation to this? और ईश्वर पुरी कौन है? It is hidden. ये छुपा हुआ है. You have to extract it, and I did by my research. इसका हमें निकालना पड़ेगा रिसर्च करके. महाराज ने रिसर्च किया. I asked so many devotees, if Madhavendra Puri is a Kalpa-vriksha tree, who is Ishvara Puri? तो मैं बहुत सारे भक्तों से पूछा अगर माधवेंद्र पुरी कल्प वृक्ष है तो ईश्वर पुरी कौन है? It is not mentioned anywhere. और ये कहीं पे मेंशन नहीं है. I'm a sort of a scholar myself, but even the other scholars in ISKCON couldn't. You're asking a question. No, wait. We cannot find this. So महाराज बोला कि मैं स्कॉलरली पढ़ हूँ या और भी हमारे ISKCON में जो स्कॉलर हैं उन्होंने भी प्रयास बोला लेकिन कोई बता नहीं पा रहे थे कहाँ क्या है. And he's such an important personality, Ishvara Puri. और ईश्वर पुरी हमारे संप्रदाय में बहुत ही महान व्यक्तित्व है. So how did Lord Krishna send his advance party mentioning it's Madhavendra Puri and Ishvara Puri? You go. So in what form is Ishvara Puri to go? We know the Kalpa-vriksha will go as Madhavendra Puri, but what form Ishvara Puri will go? So भगवान कृष्ण ने अपने एडवांस पार्टी को भेजा उसमें से माधवेंद्र पुरी और ईश्वर पुरी को भेजा. माधवेंद्र पुरी तो कल्प वृक्ष थे बाकी ईश्वर पुरी कौन थे जिनको भेजा. So first this is described by Srila Kavikarnapur in the Gaur Gonades Tipika in a hidden way. तो श्रीला कविकर्णपुर ने गौर गणेश दीपिका में इसका बताया है लेकिन बहुत ही गुह्य रूप में बताया है. So the best translation to that in English would be that Madhavendra Puri's disciple is Ishvara Puri. तो उसका जो अनुवाद है माधवेंद्र पुरी का शिष्य ईश्वर पुरी है. And Ishvara Puri carefully understood the mellows of conjugal love for Lord Krishna and was able to distribute that fruit of love of Godhead to others by the mercy of Madhavendra Puri. और जो ईश्वर पुरी जो भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य रस है उसको उन्होंने बड़ी ध्यान पूर्वक समझा और उसको उन्होंने वितरण किया श्रील माधवेंद्र पुरी की कृपा से. It sounds poetic, but it's hidden there, and the evidence is given in Caitanya Caritamrita. तो ये बड़ा कभी का पोएटिक लग रहा है लेकिन ये इसमें इसका रहस्य छुपा हुआ है जो कि चैतन्य चरितामृत में इसका एविडेंस है. In Adi-lila at chapter 9, text 11. और ये आदि-लीला चैप्टर 9 टेक्स्ट 9 and 10 में दिया गया. So the verse is Shri Ishvara Puri Rupe Ankura Pustahaila Wa Apane Chaitanya Mali Skanda Upajila. And the translation: the seed of devotional service next fructified in the form of Ishvara Puri. So जो भक्ति का बीज है तो वो अंकुरित हुआ ईश्वर पुरी के रूप में. And then the gardener himself, Chaitanya Mahaprabhu, became the main trunk of the tree of devotional service. और जो श्री चैतन्य महाप्रभु है उस भक्ति वृक्ष का
तना बने. So, Madhavendra Puri is the desire tree, Kalpavriksha tree of devotional service. माधवेंद्र पुरी जो भक्ति का कल्प वृक्ष है. And Ishvara Puri is the fruitified form of the desire tree of devotional service. और जो ईश्वर पुरी है जो भक्ति कल्प वृक्ष है उसका fruit. You see, he cannot translate also. He cannot. It's not so easy. फलित रूप है, फल रूप है, you can say. फल रूप. So if Madhavendra Puri is a Kalpavriksha tree, then Ishvara Puri is the fruits and the flowers. Is that simple enough now? So माधवेंद्र पुरी कल्प वृक्ष है और जो ईश्वर पुरी है जो उसका फल और फूल है. So in Vraj or in Krishna Lila, Ishvara Puri is the fruits and the flowers of the Kalpa Vriksha tree, who is Madhavendra Puri. So जो ईश्वर पुरी है ब्रज लीला में ईश्वर पुरी कल्प वृक्ष है और उसका जो फलित रूप है फूल और फल है वो ईश्वर पुरी है. So when Madhavendra Puri blessed Ishvara Puri offered those fruits and flowers to Sri Chaitanya Mahaprabhu, who became then the main trunk of the tree of devotional service for all of us in our sampradaya. तो जब माधवेंद्र पुरी ने ईश्वर पुरी को आशीर्वाद दिया उन फलों को उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रदान किया जो बाद में इस जो वृक्ष का मुख्य ट्रंक या तना बने. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu gave us the Hare Krishna Maha-Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To water our bhakti-lata beach, which is also a form of a devotional kripa. So Sri Chaitanya Mahaprabhu ने हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया और हमारी जो भक्ति लता बीज को जल प्रदान करने के लिए जो कि ये भक्ति का बीज का एक रूप है. And His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada has spread that watering of our devotional kripa to become devotees by Prithivite Acharadi and Nagaradi Gram, Sarvatma Prachar, Abhimoranam, all over the world, that the holy name will be heard, sung and glorified. और श्रील प्रभुपाद ने ये हरि नाम जो है हरे कृष्ण महामंत्र है सारे पृथ्वी में वितरित किया जैसे कि महाप्रभु का आज्ञा था. पृथ्वी ते अच्छे नगर दे ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम. सारे पृथ्वी में मेरे नाम का जो है श्रवण होगा, सब लोग गाएंगे सुनेंगे और अनुभव करेंगे. So do you have any comments or questions? किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? Microphone. Is Radha Raman? Yes. Radha Raman? Radha Raman Dev. Radha Raman Dev. Who is a Dev also? Radha Raman Dev. Das. Prabhu. Yes. Thank you, Maharaj. Maharaj, I want to understand this. Ishwapuri was like tree and Kalpavriksha was Madhavendra Puri and fruits and flowers is Ishwarpuri. And then how can you imagine in the kunj, you know? And the trunk. The flowers are falling. By the mercy of the Kalpavriksha tree, which is Madhavendra Puri, the flowers are falling. So Ishvara Puri becomes the belly. Flowers. So Madhavendra Puri is Kalpavriksha. And then the fruits falling. So Radharani takes one fruit and gives Krishna, please eat. So he bites.
and she quickly takes it away and gets Mahaprasad. There's no intimacy of so-called mundane materialistic union between male and female. They are one supreme soul in two forms. That's pure. All these Babajis and Sahajas in Vraj, they don't know this thing. It's right there in Prabhupada's books. Hari. Because they're on the mundane platform. They tell you, male body, female body. How can it be? There's Ishvara Bhav and there's Ishvari Bhav. Radharani is Ishvari. Krishna is Ishvara. But you cannot separate them. When Ishvara wants to be controlled, he expands it as Ishvari. So when sorry. So ये जो भाव है प्रभुपाद जी बुक में बताया गया है, लेकिन जो राधा सॉरी जो बाबा जी रहे सहजिया लोग हैं इस बात को जानते नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी बुक में ये सारे कुछ है। जब ईश्वर है अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब ही वांट टू बी कंट्रोल, तो ईश्वरी के रूप में प्रकट होते हैं। कृष्ण ईश्वर है और राधा रानी ईश्वरी है। And when Krishna is Ishvara, Parama Krishna, when Krishna wants to be controlled, not that he can be controlled by some other external source. Krishna desires to be controlled by himself, and therefore Mirgamanda Ganda. Therefore the musk Kasturi gives off a fragrance. You getting it? So when Krishna expands, gives off, Radharani comes as Ishvari to control him. जब कृष्ण चाहते हैं कि कोई उनको नियंत्रित करे, हालांकि कृष्ण को कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन जो जब चाहते हैं उनको कोई नियंत्रण करे तो अपने आप को राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं। जैसे कस्तूरी है और कस्तूरी का गंध है वो अलग नहीं है, इसी तरह से राधा और कृष्ण अलग नहीं है। But then Radharani becomes such a powerful Ishvari that Krishna cannot experience his own love for himself, because she is Krishna Prema. Krishna Prema is different from Krishna, although it comes from Krishna. Prema for love for Krishna is not experienced by Krishna, is experienced by Radharani. तो राधा रानी इतने शक्तिशाली ईश्वरी है कि जो उनके जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, जिसको हम कृष्ण प्रेम बोलते हैं, कृष्ण और कृष्ण प्रेम में अंतर है, तो उसको कृष्ण स्वयं भी अनुभव नहीं कर पाता। Although the fragrance is coming from musk, but musk cannot experience its own fragrance. जैसे कस्तूरी से ही Yes or no? जैसे कस्तूरी से ही कस्तूरी का गंध आ रहा है, लेकिन कस्तूरी अपने आप उस गंध को अनुभव नहीं कर सकती। Although heat and light comes from fire, but fire cannot experience its own heat and light. हालांकि आग से ही आलोक और उत्ताप आ रहा है, लेकिन आग आलोक और उत्ताप को खूब अनुभव नहीं कर सकती। Although the sun shine and the sun's rays come from the sun, but the sun cannot experience sunshine and sun's rays. जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की किरणें सूर्य से आ रहा है, लेकिन सूर्य उस चीज को खुद अनुभव नहीं कर सकता। So Krishna only experiences Radha Bhav, the ecstasy of Radha's service to him. कृष्ण जो है केवल राधा भाव उसको अनुभव करते हैं जो राधा रानी उनकी सेवा करते हैं। Because Radharani is a form of Krishna Prema, not Radharani Krishna Prema, love for Krishna. राधा रानी जो मूर्तिमंत कृष्ण प्रेम है उसी रूप में है। So when Krishna Prema fuses with Radha Bhav,
That is the form of Lord Chaitanya. जब कृष्ण प्रेम तो राधा भाव के साथ उसका फ्यूजन या मिल जाता है, उसको वो श्री चैतन्य महाप्रभु है. There's no kasturi and ganda. It's something else. तो ये कस्तूरी और गंध नहीं, ये और कुछ है. That's the unique form of Sri Krishna Chaitanya. Radha-Krishna nahi anya. ये यूनिक फॉर्म है, अलग सा रूप है जो कि श्री राधा कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य. And it cannot be understood. ये समझा नहीं जा सकता. The only person who can understand is Sri Padmadevendra Puri. जो ओनली व्यक्ति जो समझ सकते हैं वो श्री माधवेंद्र पुरी है. What's your question? You gave more than the question, Maharaj. Thank you so much. Maharaj, my question was just like we in materialistic logic, like roots. So, a trunk comes before the fruits. Huh? Trunk comes before the fruits. I mean, trunk. Ishwarpuri is compared with the fruits, and Chaitanya Mahaprabhu is trunk of the devotee. The trunk doesn't come before the fruits. The roots come before the trunk. Yeah, root is the Madhyavan Puri, and then fruits is Ishwarpuri. The roots come before the trunk. Yes, Then Maharaj. comes the branches and the leaves and the fruits and the flowers. Yes. Have I answered your question? Because you didn't use the word root. You're saying the trunk come before the fruits. But I said the root come before the trunk. So Yeah, Madhavendra that is Madhavendra Puri, in his original form, is the root of all Kalpavriksha trees in Braj. Every Kalpavriksha tree comes from the parent, the root. So Madhavendra comes first, then Ishwarpuri. Madhavanpuri comes first, then Ishwarpuri comes, and then Lord Chaitanya comes. Madhavendra Puri doesn't come first. That means you are saying there was no Kalpavriksha trees at once. The Kalpavriksha trees are eternal. Automatically the fruits and flowers are there. That's Ishvara Puri. So you are making birth, old age, disease and death. They come into existence. They don't come into existence. They are eternal. Then suddenly you may ask me another question. So if this Kalpavriksha tree can give all types of fruits, so when you take one apple and you bite it, the apple disappears? Then you'll ask such questions, on the material platform. No. See? Like, sorry, supposed to translate. इनका प्रश्न था कि जैसे कि पहले माधवेंद्र पुरी तो जड़ है और फिर चैतन्य महाप्रभु तना है और ईश्वरपुरी फ्रूट्स है, तो तना कैसे फ्रूट कैसे तने से पहले आ गया? दिस इज द क्वेश्चन, है ना, ये ना. सो महाराज का उत्तर ये था कि इसका अर्थ है कि हम सोचते हैं कि भौतिक जगत के जो जन्म मृत्यु जरा बुद्धि उसको सोच रहे कि कुछ आरंभ हुआ फिर ये हुआ, लेकिन ये सब कुछ इटर्नल है, शाश्वत है. फ्रूट तना भी शाश्वत है, फ्रूट भी शाश्वत है, जड़ भी शाश्वत है. तो यहाँ पे ये भौतिक जो जगत का जो जन्म मृत्यु उसको हम लगा नहीं सकते लॉजिक. और दूसरी चीज़ है देखिए, आप कृष्ण को पूछ रहे कि कृष्ण जैसे फल खाया कृष्ण ने तो उसके फल का क्या अस्तित्व खत्म हो जाएगा? ऐसा भी नहीं है, सब कुछ शाश्वत है. See, when you eat an apple that's offered to Radha Madhava, apple, and they have eaten it, right? But how come it's still there for you to eat? Mahaprasad, right? You getting it? But when you eat that apple as Mahaprasad, which they blessed, by just seeing, because the Lord and Radharani, Krishna and Radha-Krishna, they can eat through any sense, any sense. So जब हम भगवान जो प्रसाद हम खाते हैं
तो क्योंकि उसको पहले तो राधा कृष्ण ने ग्रहण कर चुके, खा चुके हैं, तो फिर हमें कैसे प्राप्त होता है? वो अपने दृष्टि के माध्यम से ही खाता है, क्योंकि वो अपने कोई भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं, वो केवल दृष्टि से भी उसको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्यों फिर हमें पूरी एज इट इज प्राप्त होता है। So Srila Prabhupada asked one disciple, can you name one living entity that can eat through its legs? प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य से पूछा, आपने ऐसे कोई जीवात्मा का नाम ले सकते हैं जो कि अपने पैरों के थ्रू खाता है? Who said the answer? Who? What's that living entity? The tree, through its roots. It eats through its roots. It's a leg. तो जो पेड़ है अपने पैरों के थ्रू, रूट्स के थ्रू जो है खाता है। So when you eat that Mahaprasad apple, that tree which gave that apple gets more fruits. तो जब हम इस फ्रूट्स को, फल को भगवान को अर्पित करते हैं, जो ट्री है, पेड़ है, जो जिसको से फल प्राप्त है, वो और ज्यादा फल देता है। So by giving, the tree receives more. Same apple is grown further. जो ट्री पेड़ देता है तो और ज्यादा होता है, दे के और ज्यादा बढ़ता है। So that unknown farmer who has an apple tree, and you went to the market and buy apples, he doesn't know that that tree gave its fruit to the Lord. He doesn't know why so much more fruits are coming from the same tree. This only this tree. Why? You got to tell him. Then he'll give you more apples for the Lord. क्योंकि हमने फ्रूट दिया और कोई व्यक्ति जो फार्मर है, हम जिसको जानते नहीं, उसका बगीचे से फल आया, कृष्ण को अर्पित हुआ, और वो देख रहा है कि मेरे इस पेड़ से ज़्यादा फल निकल रहा है, उसको भी समझ नहीं आता क्यों दे रहा है, ज़्यादा फल दे रहा है, क्योंकि कृष्ण को ऑलरेडी अर्पित हो चुका है। When I was president in Durban, Radha temple, I used to go for Boga run. You know Boga? Go to market. तो महाराज बताया कि जब मैं डर्बन टेम्पल में प्रेसिडेंट था, तो मार्केट में जाता था भोग लाने के लिए। And I like that service. You know, you see all the flowers, the fruits and the vegetables. I like to be amongst them. So I used to tell the farmers, you know, this, you're giving this. This is the farmers bringing from their farm themselves directly. No middleman. तो मार्केट में जाना पसंद था, वहाँ पर जाके जो फार्मर्स आते थे, वो खास करके जो खुद जो फार्मर्स आते थे गांव से या जहाँ से भी, मिडिलमैन कोई नहीं होता था। And it's called a farmer's market. अच्छा, उसका नाम ही था फार्मर्स मार्केट। Sometimes they bring the potatoes, it still has soil in it. Then it's, you know, yes. कभी कभी वो आलू लाते थे, उसमें मिट्टी लगा होता था, बोलते थे ये देखो एक पूरा फार्म से आया है। So some of them very pious. They said, I'll give you for free. I asked why? I know, I'll get more. तो उनमें से कुछ बड़े पायस होते थे, धर्मात्मा होते थे, वो बोलते थे कि हम आपको फ्री देंगे। पूछते क्यों फ्री दोगे? वो जब मैं फ्री में दूंगा तो मुझे और ज्यादा मिलेगा। You're never the loser when you give to Krishna. हम कभी भी लूजर नहीं है जब हम कृष्ण को कुछ देते हैं। Me hungry. Thank you, Maharaj. There's some more hands up. I see there's like many. There's like 10 hands up. You know. It's okay. Srila Prabhupada ki Jai. Shripad Madhavendra Puri Pad ki Jai. Srila Ishvara Puri Pad ki Jai. Ananta Kodi Vaishnava Vranda ki Jai. Bhagavat Breakfast Prasadam ki Jai. Sri Chaitanya Caritamrita ki Jai. Shrila Krishnadasa Kaviraja Goswami ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Excellence Bhakti Brihat Bhagavatam Swami Maharaj ki Jai. Hare Krishna. तो नेक्स्ट महाराज की क्लास होगा, संडे फेस्टिवल क्लास भी होगा। We didn't cost this evening? हैं?
That's on Sunday. Today is Friday, right? Yes, But we this take general calls, right? of course evening also जपाश्रय course है, उसमें participants भी आ सकते हैं and also there is a listener class also. So both are welcome. And कल भी और कल स्पेशल है, आपको उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो कि रात में बताएंगे महाराज. Did they give you the puri and choli yet? No. Tomorrow is that. He's starving, you know. Ansh. Yes. I think they have some puri and sabji from Mahaprasad. Give him that. What's for breakfast for the devotees today? This morning, now. You know? For everyone, they won't get. At least they'll get. But for the others, what they cook for breakfast? Kofta. What's a kofta? What vegetable kofta? Huh? Loki. Only kofta they're giving today. Chapati, kofta, sabji, what else? Dal. We're increasing appetite. Please go fast. Hare Krishna.